Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's shake the pulse of stock market. So again, I'm here present with the stock which has posted robust Q2 earnings, Q2 results. I will discuss its fundamental also along with the Q2 results, and we'll discuss its buying level for the long term. So, to know the name of the stock and the buying level of this stock, stay connected till the end and smash the like button and subscribe the channel for these kind of stocks buying level and these kind of update. So let's start with the name of the stock. Stock is large cap stock and it's a very good market cap of this stock. I think this is a top stock, top two stock from the auto sector. ऑटो सेक्टर का ये टॉप स्टॉक टॉप थ्री स्टॉक में आता है और इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है द बिग मार्केट कैप ऑफ दिस स्टॉक. So this stock is actually posted a robust Q2 results because this company was posting the loss since many years. वो बहुत सारे लॉस में थी and slowly they have reduced their loss and they have now become profitable. Now they have come into the profit. So now company even last year last if why we are checking the y on y results, and last year they have posted the loss, and now this year they have become profitable, and they have posted the good good profit. Let me keep the fact. The result is actually here. You can see the profit is now become the 3,764 crore in Q2 24 FY24, which was in last Q2 FY23. It was loss loss of what 944 945 का loss था. Now it has become the profit of 3,764 crore. See the difference, see the jump, how this company has shown the growth. And if you see the revenue has become the 1.05 lakh crore, which was y on y in last year it was 79,611 crore, जो कि now it has become the 1.05 lakh crore. See the jump in also in revenue, and this is the 32% jump. EBITDA is also has become the 13,767 crore, which was in last year it was only 5,572 crore. Means 5,572 crore say it has become 13,767 crore. The big jump in the EBITDA, which is actually EBITDA is very important. So इतना अच्छा jump, इतना अच्छा growth company is showing. मतलब I cannot, you can see yourself only. And margin is 13.1% this Q2, which was in last Q2 y on y it was 7% in last Q2 in FY23. So 7% say the margin has become 13.1%. Tremendous growth. Yes, and this is a 610 bps increase in jump. So इससे अच्छा रिजल्ट और क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी दिस ग्रोथ कंपनी शोइंग. और ये ऑलरेडी एक अच्छा लार्ज कैप अच्छी टॉप कंपनी है फ्रॉम द ऑटो सेक्टर, और इस कंपनी में तो अच्छा खासा ग्रोथ हो ही रहा है. और ईवी का एक प्रोस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस ऑटो सेक्टर, which I want to mention here. Now I have discussed the result, and one more the important thing, तो इनका लग्जरी सब्सिडरी है, लग्जरी सेक्शन है JLR का. उसका रेवेन्यू इज नाउ 30.4% एट 6.9 बिलियन यूरो. तो वाई ऑन वाई इसमें भी 30.4% का जंप है, एंड अबिटा में भी 14.9% का
JLR के सेक्शन में जंप है. That is actually very good, and company has beaten the estimate from the CNBC and CNBC, and there also you can, if you want, you can check here. The company has beaten all the estimate. Only is there a small decline in revenue, sorry, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन. प्रॉफिट एस्टिमेट जो था 4039 का था, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली डाउन है. एज ऑलवेज एक्सपेक्टेशन इज हाई, so this is not a very important thing. So this was the overall Q2, robust Q2 earnings posted by Tata Motor in last Friday. इसके साथ ही if you see the fundamentals, you will come to know the what company is actually how it is growing. इसका फंडामेंटल जो है, यू कैन सी हियर, कंपनी का बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है, बिगेस्ट. आई थिंक इट इज नंबर 2 स्टॉक फ्रॉम द ऑटो सेक्टर आफ्टर मारुति सुजुकी. तो मार्केट कैप इज 2,37,564 करोड़, एंड द CMP मीन्स इसका प्राइस जो चल रहा है 647 का चल रहा है. यस, 647 इस कंपनी इज ट्रेडिंग ऑन दिस प्राइस. So I'm first coming on the 14.84, the P, the price earning ratio of the company is of the stock is 14.84, means almost 15 uh, है टाटा मोटर का पी, जो कि 15 इज अंडर वैल्यूड. यस, दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट वेरी चीप वैल्यू, बहुत ही सस्ते में ये ट्रेड कर रहा है. बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस स्टॉक. दिस इज द इसका इंडस्ट्रियल पी भी 27 है, जो कि इससे ज़्यादा है. इसका मीडियन पी भी अराउंड 38 अराउंड है, जो कि वो भी इससे ज़्यादा है. मीन्स स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अभी बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है. वेरी गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, with the even along with the EV perspective also, EV prospect also. So PE I discussed, it is very मतलब undervalued. और मार्केट कैप हो गया. डिविडेंड यील्ड इज नॉट दैट गुड, विच इज 0.31. I don't find it very good, but it's okay. And ROC is 6%, जो कि it is also not at my standard level. So, okay, so ROC is also less और RO is also very less, जो स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता है. but as I already discussed, this stock is showing good growth. तो ये definitely slowly it will also become good. Maybe it will actually increase. Only two things which I don't find it is very good. You can study the stock, and the decision is completely yours. I need only to keep the fact. Or debt to equity is 2.38, because these companies always work on debt. तो थोड़ा बहुत debt तो we expect from these sectors stocks. So 2.38 debt है, जो कि yes, it is of course um, more from the expectation. और ईपीएस इज ओके गुड. प्लस शेयर भी अच्छा खासा है, 1 कंपनी भी धीरे धीरे अपने प्लस शेयर भी छुड़ा रही है. तो 1.82 का प्लस शेयर भी है, जो कि ऑल्सो इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ नॉट गुड साइन एक्चुअली. तो ये जो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव डेटा है, that you should see and you should study also, because I am doing all these things for education purpose. So ये I need to keep these fact about the stock and about the company. So ये प्लस शेयर है, जो कि yes, it is a small negative sign. फ्री कैश फ्लो इज गुड ऑफ द कंपनी, अच्छा कैश फ्लो रखा है कंपनी ने. This was actually short picture of the stock. You can go through detail with this result also and with the stock also. As मेरे पास टाइम कम है, तो I can discuss in short only. Now I'll go to the buying level.
So now we have come to the chart to discuss the buying level. So see the buying level. To know the buying level, I have selected the weekly chart so that a clear picture for the long term you can see here. Here I can see you can see with the stock कितने दिनों से वो इसी रेंज में मीन्स इफ सी तो 2020 2021 के भी पहले से 2021 से कितने दिनों से इसी रेंज में 500 400 इसी रेंज में घूम रहा था and then it has given the breakout and it has just up तो यहाँ पे आके इसने अ, यहाँ तक ये अ, आके एक स्टॉप लिया एंड नाउ फ्रॉम हियर इट इज कंसोलिडेटिंग व्हाट इज द एक्चुअली लेवल इट इज एक्चुअली 600 के आस अभी अभी तो इट इज ट्रेडिंग एट 650 तो 650 के आस 650 पे ये इसलिए ट्रेड कर रहा है बिकॉज अभी इट हैज पोस्टेड द गुड क्यू 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 टू अर्निंग तो उस दिन इसने अच्छा मूव दिखाया था द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द क्यू टू रिजल्ट के बाद इसने अच्छा ये जंप दिखाया था बट ये तो वीक का है सो इट इज लुकिंग एवरेज काइंड ऑफ फ्लैग कैंडल बट in daily candle it is actually on last Friday shown a very good. I think it was 4% more than 4% it was up on Friday because of the good Q2 result. So uh, ऐसा नहीं है करेक्शन में ये अच्छा खासा गिरा था अगर अभी फिर से कोई करेक्शन आता है कोई फॉल आता है तो इट मे अगेन कम टिल हियर तो दिस दो ये एक फ्लैग बन रहा है दिस इज अ फ्लैग एंड दिस can be here can be a good support for the stock which is I can see it is 610 के आसपास है 610 के आसपास और मैं इफ आई विल टेक द राउंड फिगर 600 के आसपास जो कि 600 के 610 के बीच ही में रहेगा 600 को तो ये नहीं तोड़ना चाहिए आई डोंट थिंक नाउ इट विल ब्रेक द 600 सो 600 615 20 इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय दिस स्टॉक तो कहाँ से कहाँ तक वी कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक जो एक लेवल पे तो ये कोई खरीद नहीं सकता सो आई शुड टेल द एक जोन बताऊं तो एक 600 टू दिस दिस 680 ये 680 का जो एक लेवल है यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन जो कि 680 है 680 तक ये शांत रहेगा आफ्टर दैट आफ्टर 680 then it will give a breakout and it will go up and up so a good buying level for the Tata Motor can be 600 to 680 और from 680 को ब्रेक करने के बाद it will it can go to 757 as I'm talking about long term तो ये और भी आगे जाएगा तो 700 तो एक मैं बहुत ही कम समय की बात करूंगी मीन्स मिड टर्म की बात करूंगी बट आगे तो ये और भी काफ़ी ऊपर जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ईवी वगैरह आने के बाद तो 1000 तक भी जा सकता है बट 1000 के लिए टाइम लगेगा इट विल टेक टाइम यू नीड टू होल्ड इट विद द कन्विक्शन सो अभी 680 को ब्रेक करके 750 तक का ये तुरंत का ही जंप है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म एज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लॉन्ग टर्म so the buying zone for Tata Motor for the long term can be 600 to 680. This was short picture, short analysis of the stock with the Q2 results, with fundamental, with buying level. You can go through in detail and take your decision. And if you have any queries regarding any stock, you can comment in comment box and DM me on the Instagram and Twitter. The ID is on the screen. To know the buying level for the Reliance for the long term, click the right button. To know the buying level for the HUL, click the left button. Stay connected to the channel for these kind of stocks update of buying level and like and subscribe and share also. Signing off.